Hello friends, listen to me very carefully. For this lecture, we are going to start with the question number 1, rather illustration number 1. Okay, and you are all requested to prepare full page trading and profit and loss account. वो combined आने वाला है, it is a combined. Combined मैंने कहा है, so actually this is the trading account above and below it is a profit and loss account. ये जो टोटल का मतलब साइन मैंने किया है इसके ऊपर आपको 8-9 लाइन छोड़ना है. यू आर सपोज टू कीप 8 to 9 लाइन्स. ऊपर 8-9 लाइन्स आएगा. 8 ते 9 ओळी सोडा आणि बाकी सगळा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आहे. And on the next page prepare balance sheet as on 31st March 2019. Okay, so you prepare like this. तयार करून घ्या. तुमचं सगळ्यांचं झालं की मला सांगा. आमचं झालं. So accordingly we can proceed. So it is expected that you are ready. Okay, with the ruling, this kind of ruling. Okay, अगर नहीं है तो अगर वीडियो देख रहे हैं आप, you can pause the video and you can do the ruling. Now I will be doing the screen sharing part. The screen sharing मैं करने वाला हूँ and I am going to show you the problem first. मतलब illustration दिखाने वाला हूँ. Okay, which is the very important, very important. So now let us proceed with the screen sharing part. Your attention required please. And screen sharing में आने वाला है आपके सामने problem आ गया. देखो, this is the problem in front of you. ये problem है. मैं थोड़ा adjustment कर लेता हूँ so that you can understand in the better manner. So what is given in the illustration number 1? क्या दिया है? जरा carefully बघा. From the following trial balance of Bharadwaj and Sons prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet on that date. मतलब तीनों भी same date पे रहेगा. The trial balance is given to you. Now I am requesting you to write down here. मतलब जो हम लोग लिखने वाले हैं. जैसे royalties. Royalties are to be recorded to the TD, trading debit. TD, right here TD, royalties are lesser TD. Okay. So royalty you are supposed to write TD. Okay. अजून काय काय दिसतं आपण बघू. ड्रॉइंग्स. हा, ड्रॉइंग्स. राइट देयर लेस फ्रॉम कॅपिटल. हे पेन्सिल लिहिल्या, राइट विथ पेन्सिल. वेजेस TD, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. Purchases also TD, trading account debit. Look at the opposite side, please. The purchase returns are given to you. This is like a purchase return तुम्हाला. Can you see the purchase return? That we are going to subtract. मतलब purchase में से purchase return हम लोग minus करने वाले हैं. We are going to subtract here. Okay. Purchases trading debit में आएगा TD. Cash कहाँ पे आएगा? Balance sheet asset. मतलब ऐसे क्या दिखेगा? BA, balance sheet asset. BA stands for balance sheet asset. सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स. सेल्स से हम लोग माइनस करने वाले हैं. लेस फ्रॉम सेल्स. तुरंत हम लोग लिखेंगे बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. लाइक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट. सेल्स कहाँ पे आएगा? टीसी, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में आएगा. I cannot write this properly with the help of this mouse, and okay, there are certain limitations, but you write down properly, huh? Okay, this is the first question. A complete question. That's why your complete concentration is required. Okay, now look at this please. Then next item is the bank. Matlab what? Bank balance, right? BA, balance sheet asset. Insurance, profit and loss account debit. PD. Furniture, balance sheet asset. BA. Building, balance sheet asset. BA. Debtors, balance sheet asset. BA. Bad debts, PD म्हणजे काय? प्रॉफिट अँड लॉस डेबिट. हे आपण सगळं सुरुवातीला करणार बरं का. 3-4 क्वेश्चन्स. एकदा तुमच्या डोक्यात बसलं की कुठला आयटम कुठं लिहायचं, वे टू रेकॉर्ड विच आयटम, देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड. असं काही गरज नाही पडणार.
Sundry expenses also PD, profit and loss debit. Traveling expenses PD, profit and loss debit. Opening stock TD, trading debit. पहिला आयटम असतो बघा नंबर 1. Carriage outward, profit and loss debit PC. Rent, profit and loss debit. सॉरी इथे पीडी पाहिजे तर पीडी मी पीसी म्हणलं काहीतरी चुकून. ओके. कॅरेज आउटवर्ड पीडी, रेंट ऑल्सो पीडी. कॅरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट टीडी. salaries PD, profit and loss debit. Okay, now debit balances are finished. Now credit balances. Sundry creditors, liability, balance sheet liability, BL. सेल्स तो हमने लिखा है ऑलरेडी, टीसी ट्रेडिंग क्रेडिट. परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस, ते इमिजिएटली करायचे बरं का, हातासारशी करायचे काम, लगे हात काम करना है उसका. कैपिटल BL, बैलेंस शीट लायबिलिटी. बिल्स पेएबल BL, बैलेंस शीट लायबिलिटी. बैंक ओवरड्राफ्ट BL, बैलेंस शीट लायबिलिटी. ओके. हा, आता इथे बघा प्लीज, लुक हियर. There is only one adjustment given to you because this is the first question. हा पहिला प्रश्न आहे. Okay. So what is given to you? Additional information. Closing stock is 54,000. मग याचा डबल इफेक्ट काय येतो? What is the double effect of the closing stock? काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं. नसेल तर तुम्ही तिथे पेन्सिलने लिहा. Where to record trading account credit, and secondly it will appear balance sheet asset. Trading account credit and balance sheet asset. Trading credit and balance sheet asset. Adjustment or additional information always double effect because they are unrecorded transactions. Okay. Now, if you are ready, we can start with the solution because we will be writing the same. हम लोग लिखने वाले हैं. Okay. एक important point समजून घ्या. We are going to record in the serial order. जसं येईल तसं लिहायचं. पहिलं रॉयल्टीज लिहिणार आहे आपण. पण कसं लिहिणार माहिती का? लुक हियर. पहले आपको ओपनिंग स्टॉक को जगह छोड़नी पड़ेगी, फिर परचेसेस माइनस परचेस रिटर्न. So leaving three lines, you'll be writing royalties. Okay. मैं जसं येईल तसं लिहायचं. ड्रॉइंग्स, मग ड्रॉइंग्स लिहिताना इमिजिएटली कॅपिटल पण लिहिणार मी, लेस फ्रॉम कॅपिटल. So I will write here capital minus leaving two lines. I will show minus drawings like this. असं मी लिहित जाणार आहे. Now look at your textbook because I'll be doing the same on the board. मी बोर्डवर करणार आहे. So let us stop the screen sharing part. Yes. Now your attention required and we are starting with the solution. Okay. चला पहिलाच आयटम काय दिसतो? Royalties. Okay, this is to be recorded to the trading account debit side. To royalties. And the royalties are 4,000. Outer column. When to write in the inner column? If we want to make certain addition or subtraction. एखादा आयटम इनर कॉलम मध्ये कधी लिहायचा? जेव्हा तुम्हाला त्यात काय प्लस करायचंय, माइनस करायचंय, आपको कुछ मतलब ऐड करना है, लेस करना है, इसलिए वो इनर कॉलम होता है. अगर नहीं है तो आउटर कॉलम में जाएगा. ड्रॉइंग्स. यस, लिसन टू मी केअरफुली नाउ. ड्रॉइंग्स बद्दल मी तुम्हाला काय लिहून दिलं? लेस फ्रॉम कैपिटल. तो पहले अभी कैपिटल लिखना पड़ेगा, है ना? लुक एट द क्रेडिट बैलेंसेस. व्हाट इज द कैपिटल अमाउंट गिवन टू यू? इट इज 2,50,000. Record the same in balance sheet liabilities. Inner column, always inner column. Now leaving 2-3 lines right here, leaving 2-3 lines, 2 to 3 lines right here. Drawings minus करायचे drawings, पर माइनस अपन नंतर करणार आहे, बाद में माइनस करेंगे, अभी लिखेंगे बस. We are just going to write, but we are not going to subtract actually. We will subtract it in the end, not now, in the end. So capital 2,50,000, drawings are 10,000. पर सिक्वेन्स सोडायचा नाही. परत लक्षात ठेवा, पहिलं डेबिट तर डेबिट कव्हर करायचं आपल्याला. बीच में जो आएगा मतलब रिलेटेड आइटम ऑफ क्रेडिट बैलेंस
वो लिखना पड़ेगा. Then wages, trading account debit 6,000. Trading account debit wages are rupees 6,000. Then thereafter purchases, leaving one line for writing the opening stock. Opening stock like line soda. Write purchases in the inner column. Okay. Inner column. तुम्ही बघितलं का मी काय केलं 71,000 उसको है ना नीचे एक लाइन छोड़ के मैंने ऐसा एक लाइन मारा है क्योंकि बीच में मुझे कुछ लिखना भी है. क्या लिखना है? परचेस रिटर्न. चला बघा परचेस रिटर्न किती आहे. Look at the credit balances. What is the amount of purchase return given to you? 3,000. So purchase return minus from purchases less purchase return 3,000. Now it is outer column 68,000. Outer column में आएगा 68,000. मतलब परचेस को पहले आपको लिखना है, बाद में परचेस रिटर्न वहां से माइनस करके दिखाना है. परचेस रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड. कैश बैलेंस शीट एसेट 10,000 rupees. आउटर कॉलम. सेल्स रिटर्न. हाँ आपण आता काय करणार? सेल्स मधनं मायनस. तो सेल्स कहाँ पे आता है? पहले सेल्स फाइंड आउट करो. लुक एट द क्रेडिट बैलेंसेस. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स गिवन टू यू? सेल्स ची अमाउंट किती आहे बघा. 81,000 inner column and minus from that sales return and the sales return amount is 5,000 rupees. So your sales are now 76,000. Net sales. आता हा प्रकार समजून घ्या. Before subtraction of a sales return or return inward, it is also called as return inward. Okay, जो sales है मतलब 81,000, it is called as a gross sales. And after subtraction of the return inward or sales return, this 76,000 is called as a net sales. The same is applicable for purchases. वो 71,000 gross purchases का amount है और परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद जो आएगा that is called as the net purchases. You must know terminology very well. Then the next is bank balance. It is asset. Cash in hand, bank balance, that is our asset. वो हमारा asset है. Outer column 40,000 rupees. Insurance आता लक्ष्य द्या. You are supposed to write the insurance. Okay, मैं ऐसा पूरा एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो आपको पता चलेगा कि भाई यहां तक है ट्रेडिंग अकाउंट, इसके नीचे है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So this is to be recorded to profit and loss account. To insurance 1,000. Outer column. Furniture, building are all assets to be recorded to balance sheet assets. Furniture 34,000. Building 1,20,000. Building 1,20,000 rupees. Sundry debtors. Balance sheet assets. Debtors are 1 lakh rupees. Then bad debts. Profit and loss account debit side. Profit and loss account debit side. Outer column 1,000. Write the amount properly.
अमाउंट अशा प्रॉपरली एका खाली एक आलं पाहिजे 0 0 0 लाइक दिस मतलब बहुत अच्छी तरीके से लिखना है आपको sundry expenses traveling expenses also profit and loss account debit side to sundry expenses I am writing the short form of expenses as the exp 3000 traveling expenses profit and loss account debit side rupees 2000 then opening stock yes it is the first item of trading account हा ट्रेडिंग अकाउंटचा पहिला आयटम आहे ओके हा म्हणजे गणपती बाप्पा आहे जसे गणपतीची पहिली पूजा करतात कुठल्याही पूजेमध्ये तसं पहिला ओपनिंग स्टॉक इथं आलाच पाहिजे opening stock is always coming as the first item in trading account debit side carriage outward profit and loss account debit side as a to carriage outward and the carriage outward is a 1600 rent profit and loss account debit side to rent 1000 then carriage inward trading account debit side carriage inward trading account debit side 400 salaries profit and loss account debit side salaries are 16,000 the debit balances are finished you are supposed to make a recording simultaneously मतलब ट्रेडिंग में लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस को भी लिखना है बैलेंस शीट में भी लिखना है ये साइमल्टेनियसली आना चाहिए आप यू मस्ट बी एबल टू डू इट ओके असं नाही करायचं पहिलं ट्रेडिंग मग प्रॉफिट अँड लॉस बॅलन्स शीट दॅट इज अ रिअली हॉरिबल थिंग असं नसतं करायचं नाउ क्रेडिट balances sundry creditors are rupees 56,000 liabilities sundry creditors liability side outer column पुढे काय दिले वाचा सेल्स अँड परचेस रिटर्न ओके इथं तुम्ही एक गाणं म्हणू शकता हम लिख चुके हैं सनम लाइक दिस सो ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय अस हम लिख चुके हैं ना तो वापस क्यों लिखना है उसको छोड़ दो हो गया हमारा काम आगे चलो कैपिटल वो भी हो गया है ओके मन में ही बोलो हम लिख चुके हैं लाइक दिस bills payable and bank overdraft that is our liability both last two items bills payable 20,000 rupees liability bills payable okay and bank overdraft is the liability amount is the 40,000 rupees आता इकडे लक्ष द्या this is a bills payable that's why liability अगर ये receivable होता bill receivable तो asset में आता था okay now we have done our ट्रायल बैलेंस पार्ट मतलब हम ट्रायल बैलेंस पूरा लिख चुके हैं ओके लिख चुके हैं अब रिकॉर्ड करना है आपको एडजस्टमेंट एक ही है ओनली वन एडजस्टमेंट इज गिवन टू यू दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 54,000 मैंने उसका बेनिफिट आपको बताया था कहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक ते बघा असं इथं लिहायचं एंडला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड क्लोजिंग स्टॉक
54,000. And balance sheet assets, you can write stock in trade, well, stock in business, stock in trade. That is only closing stock. 54,000. दोन्हीकडे अमाउंट सेम आली पाहिजे. As I told you, it is like an unrecorded transaction. Okay, so transaction जब आप record करते हो, then it is to be recorded as per the rule of double entry system. That's why two effects are required. Trading credit, balance sheet asset. Trading credit, balance sheet asset. Trading credit, balance sheet asset. Finished. Now how to close it? पहले आप क्लोज करने वाले हो ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट जजमेंट घ्या, माणसाने नेहमी जजमेंट घ्यावं. कुठली टोटल जास्त आहे, चला क्रेडिट टोटल इज मोर दॅन डेबिट टोटल. येस, 6,4,10 1,30,000 रुपीज इज द क्रेडिट टोटल. दोन्हीकडे लिहा क्रेडिट टोटल and minus debit total, whatever you are getting is called as the gross profit. CD मतलब carried down. Okay. How to calculate gross profit? Credit total minus debit total. Credit total 1,30,000. Debit total करा बरं orally 6,4,18,22. So two carried 6,810 नीट per half. Okay. 27,600 is the profit. Your gross profit is coming 27,600. मैंने यहां तक का टोटल करके यहां से 1,30,000 में से माइनस कर दिया. This gross profit is to be transferred to profit and loss account as a by gross profit BD. BD म्हणजे brought down. 27,600. $27,600 is the gross profit. आता आपल्याला जजमेंट घ्यायचं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके, whether there is a net profit or net loss. Net profit कब आने वाला है? If the credit total is more than debit total. और net loss कब होगा? अगर डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल से ज्यादा है. आता जजमेंट घ्यायला पाहिजे. माणसाने नेहमी जजमेंट घ्यावं. ओके, नाही तर गडबड होते सगळी. चला किती आहे 27,600. याची टोटल करा ओरली. 16, 18, 20, 23, 2, 25. Yes. Okay. This total is more than this total. Credit total is more than debit total. So 27,600. चला आता मायनस करून जो येईल तो नेट प्रॉफिट. इथपर्यंतची टोटल करू आपण. So for profit and loss account, credit total is 27,600. एकच आयटम आहे ग्रॉस प्रॉफिट. मायनस डेबिट टोटल काढला होता आता आपण 16, 18, 20, 23, 25, 600. 25,600. 25,600 माइनस करने के बाद कितना आता है 2,000 रुपए. ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट. So net profit of Bharadwaj and Sons is only rupees 2,000. In the bracket you write transferred to capital account. Transferred to capital account. Are you writing with me? Please check. Look here. The gross profit is transferred from trading account to profit and loss account. फिर net profit का क्या करेंगे? This is the transfer from this profit and loss account to capital. Okay. तो मैं क्या करने वाला हूं? कैपिटल में ऐड करने वाला हूं. Net profit is to be added in the capital.
Now we are going to complete this calculation. Your capital basically 2,50,000. 2,50,000. Add into that 2,000 for net profit. That is becoming 2,52,000 minus drawings 10,000. Outer column now it is 2,42,000. 2,42,000. And now hold your breath. श्वास रोखून ठेवा. आणि आता गंमत बघा. तुमचं बॅलन्स शीट टॅली व्हायला पाहिजे. नाही झालं ओळखायचं आपलं चुकलं परत पहिल्यापासून सोडवायचं. असं नाही करायला लागत. आय कॅन टेल यू हाऊ टू फाइंड आउट द मिस्टेक. ओके. आता टैली होता म्हणजे काय होतं? व्हाट डू यू मीन बाय टैली? टैली का मतलब क्या होता है? दोनों टोटल सेम 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 आना चाहिए. चलो देखते हैं. लायबिलिटी का पहले मैं टोटल करता हूँ. 7,9,8,11,4,15 3,58,000. या भी उतना आना ही चाहिए. Yes. And the balance sheet is now tallied. This is balance sheet is now tallied. So this is illustration number 1, which was very simple rather. Simple means I want to say adjustments are not given to you more. मतलब कुछ ज्यादा कुछ दिया नहीं है. Only one adjustment given to you, that is a closing stock. Okay. बाकी सगळं सिंपल होतं फार त्याच्यामध्ये. Very simple. Okay. मग तुम्हाला काय काय कळालं? What you understood? First of all, you need to do proper posting. Posting म्हणजे काय? कुठला आयटम कुठं लिहायचा हे कळलं पाहिजे. वे टू रिकॉर्ड विच आइटम, मतलब ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, बैलेंस शीट के एसेट में आएगा या लायबिलिटीज में आएगा. ओके. देन फ्रॉम परचेज क्या क्या माइनस करना पड़ता है? परचेज रिटर्न. फ्रॉम सेल्स रिटर्न. कैपिटल में से क्या माइनस होता है? ड्रॉइंग्स. लेकिन वो तुरंत माइनस नहीं करते, एट द एंड माइनस करते हैं. वी आर डूइंग द सब्ट्रैक्शन एट द एंड. हे सगळं अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. ऑल these things are very very important. Now this lecture, I'm going to remaining time, I'm going to explain the part which is called as the hidden adjustments. Hidden adjustments, and you are all requested to write with me. Okay. हे झालं असेल तुमचं लिहून. So let me wipe it out and explain you the hidden adjustment. Hidden adjustment means what? Silent adjustment. बताया नहीं जाता ऐसा करो, लेकिन करना तो पड़ता ही है. Okay. Please give the title on the separate page, hidden or self adjustments. मी बोर्डवर लिहितो. I'm writing on the board, so accordingly you can write with me. मी लिहू शकता. Give the title. Hidden or self adjustments. Hidden or self adjustments. So right, number 1, 10% investment. 10% investment.
Okay. Oblique government securities. Government securities. Oblique bonds. Oblique loan given. म्हणजे यातलं काहीतरी एक दिले तुम्हाला. Something is given like this. Okay. And amount is rupees 60,000. Okay. Year ending is 31st March 2020. 31st March 2020. हाँ एक गोष्ट इथे लिहा इथे तुम्हाला जर इथे कुठे लिहा होतं पण लिहिणं आवश्यक आहे from trial balance. These hidden adjustments are given in trial balance. Hidden adjustment कहाँ पे देते हैं? Trial balance में देते हैं. Okay. Now what is the item given in the trial balance? 10% investment, rupees 60,000, or 10% government bond, 60,000, 10% government security, 60,000, or 10% loan given to somebody else, 60,000 rupees. What is the year ending is 31st March 2020. Now listen to me very carefully. When the percentage is given to you and the date is also given to you, you need to calculate the interest on that. याचं इंटरेस्ट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं. ओके, तर इथं लिहा इंटरेस्ट 10% on 60,000 is equal to 6,000. Interest and not received. It is not received. That is outstanding. Outstanding. Also called as accrued. Okay. What are the effects? Effects are number one, add in इन्वेस्टमेंट, मतलब जो अमाउंट आने वाला है वो इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दो. यू कैन से इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट जो भी आइटम है आपका वहां पे 6,000 ऐड कर दो. एंड सेकेंड इफेक्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम. ये हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम है. दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम. चल अभी तुम्हाला परत ब्रीफली सांगतो. लिसन टू मी. You are doing the business, and during that in the business you are doing the investment. तुम्ही investment केलेली आहे. So if you are doing the investment in your business, okay, then you must get the interest. Interest मिळालं पाहिजे ना आपल्याला. मग तुम्ही किती इन्व्हेस्टमेंट केली आहे? 10% इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000. then full year interest. Now the date, मतलब कब इन्वेस्टमेंट किया उसका डेट दिया नहीं है, तो पूरे साल का 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. वो आपको इन्वेस्टमेंट में ऐड करना है, मतलब ऐड इन द 60,000. एंड सेकंड इफेक्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट. सेकंड एडजस्टमेंट नाउ आता रिवर्स है. रिवर्स 9% लोन, और यू कैन से बैंक लोन, और यू कैन से बैंक ओवरड्राफ्ट. Bank overdraft. Okay. Taken on 1st October 2019, rupees 20,000. Okay.
Now year ending is 31st March 2020. Okay. Now we are going to calculate outstanding interest on loan. Outstanding interest on loan. Outstanding interest on loan. Outstanding interest on loan. देखो मतलब हमने क्या किया? We have taken the loan from bank or bank overdraft. Bank overdraft is also liability. अच्छा, ये लिया कब आपने? 1 अक्टूबर 2019 को. कितना लोन लिया है? 20,000. And what is our year ending? 31st March 2020. Okay. In the first example, I calculated that 10% on 60,000 for full year. But now I'm going to calculate 9% on 20,000 for half year. But why half year? अक्टूबर से लेके मार्च तक. चला काउंट करा. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च. झाले का 6 नीट पहा. ओके. कसं काय कॅल्क्युलेशन करायचं बघा. 9% on 20,000. ओके. मग 9% कसे करायचे? 20,000 divided by 100 multiplied by 9/1 is equal to 1,800 for full year. 1,800 for full year. What is for 6 months time? ओके. 6 months कसे ब्रॅकेट मध्ये लिहून दाखवतो. ऑक्टोबर 2019 to 31st March 2020. म्हणजे इथे पण डेट वाइज कॅल्क्युलेशन आहेत बरं का. So what is the amount you are getting is 900. What is the interest outstanding on the loan is 900. What are the effects of the same? Effects are number 1, add in loan. Okay. Outstanding interest. Outstanding interest. Rupees 900. And secondly, to be recorded profit and loss account debit side. Profit and loss account debit side. Profit and loss account debit side. Rupees 900. तुम्ही जरा नंबर 1 आणि 2 बघा. नंबर 1 and 2 are exactly opposite. नंबर 1 is our asset. तो उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट में ऐड करके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख दिया. लेकिन लोन टेकन इज अ लायबिलिटी. फिर उसका इंटरेस्ट क्या करेंगे? ऐड इन लोन 900 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बिकॉज दैट इज आवर लॉस. नंबर 1 हमारा इनकम है, लेकिन नंबर 2 हमारा एक्सपेंडिचर है. Okay, and profit and loss account is a nominal account. Expenses are debited, incomes are credited. Simple. Number 3. Okay. Salaries, oblique wages. Okay. Paid rupees 88,000. Okay. For 11 months. असं दिलंय बरं का तुम्हाला. It is given to you that salaries, oblique wages are paid 88,000 and that is paid for how many months? 11 months. But whenever we say year is always for 12 months. 12 महिन्याचं वर्ष असतं ना. मग 11 महिने कुठून आले? Okay. That means 1 month rent is outstanding. Sorry, 1 month salary or wages outstanding. Anything, salary, wages, rent. 11 महीने का दिया है, 1 महीने का बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस है, देना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग है. तो इधर लिया. That is
1 month is outstanding. ओके, मग कॅल्क्युलेट कसं करायचं? रुपीज 88,000 divided by 11 months multiplied by that 1 month. And for 11 months it is 88,000. What is for 1 month? 11 महिन्याला एवढे, 1 महिन्याला केवढे, असा हिशोब करायचा. So your answer is rupees 8,000. And what are the effects of the same? इसका effect क्या आने वाला है? Add in salary या तो वेजेस, जो भी एग्जाम्पल है, या तो रेंट, जो भी एग्जाम्पल है, जो भी है. एंड सेकेंडली बैलेंस शीट लायबिलिटीज, बैलेंस शीट लायबिलिटीज. ओके, now next and the last part I want to explain, and that is about deferred revenue expenditure. म्हणजे काय, मी पुन्हा एकदा सांगणार आहे. Do you remember it is given in the first chapter? Okay, deferred revenue expenditure म्हणजे काय? What do you mean by deferred revenue expenditure? एक एग्जांपल देतो तुम्हाला, लगेच कळेल. ठीक आहे, नंबर 4. ओके, advertisement, rupees 18,000 paid for, okay, paid for 3 years, and in the bracket it is given that WEF January 2020. Okay, year ending 31st March 2020. Okay. What do you mean by deferred revenue expenditure? For that purpose you need to understand. परत एकदा हे ऐकायचं छान. कसं असतं माहिती का, पहिल्या चॅप्टरला जेव्हा तुम्ही वाचता तर त्यावेळेला तुम्ही असं कॅज्युअली वाचता, नुकतंच 10th स्टँडर्ड झालेलं असतं, आपलं वाचायचं म्हणून वाचायचं, असं तुम्ही करता. यू आर डुईंग इन दिस वे. ओके, पण आता तो कॉन्सेप्ट तुम्हाला समजेल. एक्सपेन्सेसचे 3 प्रकार पडतात. देर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेन्सेस. वन इज कॉल्ड एज अ revenue expenses, day-to-day expenses, salary, wages, stationery, insurance, electricity bill, postage, etc. Second is called as a capital expenditure. Capital expenditure is for purchasing assets. Okay, म्हणजे मशिनरी. आता मला सांगा, मशिनरी काय तुम्ही रोज परचेस करणार का? मशिनरी, बिल्डिंग, फर्निचर, ओके, असं काय कराल का? रोज सकाळी उठला, पूजा केली, मस्तपैकी टिळा लावला, चालला कुठे मशिनरी आणायला चालला? रोज? नॉट पॉसिबल. वी आर परचेसिंग इट only sometimes, and it is having the long life. So, and they are subject to depreciation. So that is called as a capital expenditure. पण मधी आणखीन एक प्रकार आहे, त्याला काय म्हणायचं माहिती का? डिफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. पण म्हणजे काय? Deferred revenue expenditure is an expenditure made. Basically, it is a revenue expenditure, day-to-day expenditure, but made in 1 year and applicable for coming number of years. Okay, तुम्ही बघा, तुम्ही टीव्हीला ऍडव्हर्टिजमेंट बघता, फेअर अँड लवली. ओके, आता ते काहीतरी वेगळं म्हणतात, फेअर अँड ग्लो, समथिंग लाइक दिस. ओके, फिर वो एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं? तो शादी मतलब व्हाट? ओके, शादी, रिसेप्शन, फेरे, ओके, 5 फंक्शंस. ओके,
और उसकी तैयारी मतलब मेकअप की तैयारी 5 रुपए में, like this. But for selling this particular actually cosmetic at only 5 rupees, they are spending lot of money on the advertisement. And whenever new product is launched in the market, also the big advertisement expenditure is there. मतलब एडवर्टीजमेंट का खर्चा बहुत बड़ा होता है, ओके। लेकिन उस एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट है वो 3-4 साल चलता है, ओके। अब देखो, आपने भी देखा होगा, अभी एक कोलगेट का एड आता है, ओके। वो एक मतलब छोटी सी बच्ची स्कूल में जाती है, तो वहां बाकी जो सीनियर लड़कियां है वो बुलाती है, ए छोटा पैकेट, लाइक दिस, ओके। फिर वो बोलती है आपका नाम क्या है, बड़ा पैकेट। Now, to do such kind of advertisement, they are spending a lot of money. Okay, that's why, and these actually advertisements are giving the positive effect for number of years. This is only called as a deferred revenue expenditure. मतलब ये अभी जो advertisement का 18,000 expenditure किया है, it is giving the benefit to the firm, our business, for 3 years time. आता हे कोण ठरवायचं, ते आपण नाही ठरवायचं, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपर्ट्स। हमको इतना ही मालूम है 3 साल का एडवर्टीजमेंट है ये, लेकिन कब चालू हुआ हे काय लिहिलंय मी, WEF म्हणजे काय, लॉंग फॉर्म काय, विथ इफेक्ट फ्रॉम, विथ इफेक्ट फ्रॉम म्हणजे या डेट पासून चालू झाली। आणि व्हॉट इज अवर इयर एंडिंग 31 मार्च 2020। आता याचं कॅल्क्युलेशन कसं करायचं बघा, व्हेरी इम्पॉर्टंट, right? Please, calculation part. Okay. 3 years advertisement rupees 18,000, 3 साल का 18,000 है, तो 1 साल का कितना, because we are always doing accounting for 1 year according to accrual concept. करंट ईयर का ही अकाउंट, वो भी करंट ईयर का ही करते हैं, ओनली फॉर करंट ईयर, ओके। आता हिशोब कसं करायचं बघा, 18,000 divided by 3 years, that is 6,000, okay. But 6,000 is for 12 months. 6,000 12 महिन्याचे आहेत, आपल्याकडे कुठे 12 महिने झाले. In current year we are having only 3 months. Why and how? When it started? January 2020. तो देखो, जनवरी 2020 से लेके मार्च 2020 तक, how many months are there? 3. January, February, March. Okay. So we need to calculate the advertisement which is applicable for current year. 3/12. 12 महिन्याला एवढे, 3 महिन्याला केवढे, 12 and 4 15 60 म्हणजे 1500, 1,500. What is the amount coming? 1,500. This amount is to be written off. Written off का मतलब होता है that is to be recorded profit and loss account debit. Okay. And what is about balance amount? Balance amount किती राहिली आता? Okay. 18,000 minus 1,500 minus 1,500. The balance amount is 16,500. It is treated as a prepaid, okay, and to be recorded to balance sheet asset. Balance sheet asset. Balance sheet asset. To be recorded to balance sheet asset. चला, मी तुम्हाला आणखीन सोपं करून सांगतो आता हे, ओके. more easy for you. So let me wipe it out and for giving explanation of the advertisement. याला अजून काय म्हणतात माहिती का, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज advertisement suspense. Advertisement suspense. ओके, ओके, हमारा एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर 18,000 है, उसमें करंट ईयर के लिए, करंट ईयर, ओके,
करंट ईयर का अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया है that is 1500. It is to be recorded profit and loss account debit side. Okay. And balance मतलब 18,000 minus 1,500. Balance is 16,500. This is to be recorded to B oblique S balance sheet asset. मी तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे and your answer is expected. Please listen to me carefully. अगर यहाँ पे मैंने डेट मान के चलो 1 अक्टूबर 2019 दिया होता, ओके, फिर आपका यहाँ का अमाउंट कितना आता था, यहाँ का अमाउंट कितना आता था, बताओ। 9,000 rupees. नो, कोणी सांगितलं आन्सर मला? हु टोल्ड मी आन्सर? 9,000 आन्सर नहीं है. 9,000 इज नॉट आंसर. 3,000. करेक्ट, 3,000 करेक्ट आंसर है. Okay, look here. 3 years 18,000, 1 year 6,000. Then what is for 6 months? 3,000 rupees. Okay. तुम्ही काय केलं माहिती का, ज्यांनी मला 9,000 आन्सर सांगितलं त्यांनी काय केलं माहिती का, डायरेक्टली हाफ केला. असं हाफ नहीं करायचं. आपने 18,000 का हाफ बताया मुझे, 9,000 नहीं, ऐसा नहीं है. यहाँ पे कैसा होने वाला है, ईयर वाइज पहले कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, फिर बाद में आपको महीने का हिसाब लगाना पड़ेगा. You should calculate month wise. So here it is 3,000 in that case, and the remaining amount appearing in the balance sheet asset is 15,000. Okay. These are called as the hidden adjustments. Maximum, all the things. So my dear friends, everything is properly covered by me. Okay. And now the theory part as well as the illustration number 1 is covered in this lecture. In our next lecture, we are going to solve the complete problem. मतलब पूरा ट्रायल बैलेंस, उसके साथ 4, 5, 6, 7 एडजस्टमेंट्स इस तरह से करने वाले हैं. ओके फ्रेंड्स,